अस्सलाम वालेकुम। फ़ीमैथ्स पॉडकास्ट में ये हमारी 11th इंस्टॉलमेंट है और आज की पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे गेस्ट जो हैं उनका नाम है मुंतज़िर आबदी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तानी PhD स्टूडेंट हैं और ये ICTP की एलुमनाई से भी बिलोंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट एंड सी दैट व्हाट ही हैज़ टू ऑफर टू दिस पॉडकास्ट सीरीज़। कि आपका नाम मुंतज़िर आबिदी है और आप कैम्ब्रिज से PhD आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, राइट? तो थोड़ा सा टाइम रह गया और जितना मुझे पता है आप स्टीफन हॉकिंग सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल कॉस्मोलॉजी में काम करते हैं और कंप्यूटेशनल कॉस्मोलॉजी में आप काम करते हैं और आई थिंक कॉस्मोस सुपर कंप्यूटर पे आप सिमुलेशंस करते हैं, राइट? अच्छा, इसमें एक चीज मैंने पूछनी है, वो ये है कि क्योंकि मैं पहले आपके वर्क के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपने लिखा हुआ है कि अपने आई थिंक फॉर एग्जांपल लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने लिखा हुआ है कि आप कॉस्मोस सुपर कंप्यूटर को यूज करते हैं लेट टाइम कॉस्मोलॉजी के लिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट टाइम कॉस्मोलॉजी? तो लेट टाइम कॉस्मोलॉजी का मतलब ये है कि आई मीन कॉस्मोलॉजी तो जेनेरिक फील्ड कि जिसमें यू स्टडी द होल यूनिवर्स फ्रॉम द बिग बैंग टिल नाउ. So you study the smallest scales possible, inflation or after the inflation, or you study the largest scale possible. So जो लेट टाइम कॉस्मोलॉजी है मीन्स के जो यूनिवर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनना शुरू होती है, गैलेक्सी क्लस्टरिंग और गैलेक्सीज बनते हैं, गैलेक्सीज की क्लस्टर्स बनते हैं, वो जो जो जिस टाइम पे बनती हैं वो जो कॉस्मोलॉजी होती है उसको लेट टाइम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं. So basically, large scale structure is like it's a new emerging field in cosmology, which deals with galaxy clustering or different structures which form at the late time. So उन structures को study करके observe करके जितनी information हम universe के बारे में, fundamental physics के बारे में या initial conditions के बारे में निकाल सकते हैं, that cosmology is the late time cosmology. तो इसका कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि टिपिकल टाइम कितना होता है बिग बैंग से लेके कितने टाइम बाद ये आता है फॉर एग्जांपल, यानी कि क्या ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड है या कुछ ईयर्स बाद होता है ये? नहीं so क्या होता है कि बिग बैंग के बाद फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर इन्फ्लेशन होता है. ठीक है, आपने इन्फ्लेशन अगर स्टडी किया है तो इन्फ्लेशन इज द स्मॉल टाइम जिसके अंदर यूनिवर्स एक्सपेंड करती है. और उसके अंदर क्या होता है कि जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती हैं इन द स्केलर फील्ड, वो स्केलर फील्ड की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं दे प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ सीड्स फॉर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इन द लेट टाइम्स. सो वो जो स्ट्रक्चर्स बनना शुरू होते हैं क्योंकि कहीं पर उसकी ओवर डेंसिटी होती है, स्केलर फील्ड फ्लक्चुएशन की अंडर डेंसिटी होती है. तो यूनिवर्स व्हेन एक्सपैंड, इन्फ्लेशन एंड होता है, एंड होने के बाद इट गोज इनटू डार्क एजेस. और जब वो डार्क एजेस से इमर्ज करती हैं तो बहुत सारे जो 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 इम्प्रिंट्स हैं इन्फ्लेशन के, वो आपके इम्प्रिंट जो है उसके ऊपर मौजूद होते हैं जब यूनिवर्स जो है वो डार्क एजेस से निकलती है. जब यूनिवर्स डार्क एजेस से निकलती है तो दैट टाइम अराउंड वहाँ पे जिसको हम कहते हैं आई डोंट नो कॉस्मिक रिकम्बिनेशन एरा. तो उस टाइम के अंदर जो यूनिवर्स होती है लाइक अ सूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड फोटॉन्स. तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मिलके दे फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स, एंड जो फोटॉन्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव. और वो जो फोटॉन्स होते हैं वो हमारी तरफ अभी तक 13 बिलियन ईयर्स ट्रेवल करके आते हैं, जिसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं. तो वो जो टाइम होता है वो 300,000 ईयर्स हैं आफ्टर द बैंग. तो वो भी स्टिल अर्ली यूनिवर्स कहलाता है वो रीजन. इवन द CMB इज स्टिल द अर्ली यूनिवर्स, बट जो CMB ट्रेवल करना शुरू करती है वहां से और अब तक वो जो एवोल्यूशन है यूनिवर्स की देखते हैं, उसको फिर हम लेट टाइम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो अब रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स में चले जाते हैं और फिर फोटॉन्स के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाती है यूनिवर्स. हाँ, तो तो फोटॉन्स के ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो वो दैट इज स्टिल अर्ली यूनिवर्स के अंदर. तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स नहीं बनना शुरू हो रहे, वहाँ पे सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो रहे हैं. लेकिन स्ट्रक्चर्स बनना शुरू होते हैं लेट टाइम्स के अंदर कि जब यूनिवर्स जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर स्टार्स बनते हैं, उसके अलावा उसके बाद फिर गैलेक्सीज बनना शुरू होती हैं. बट गैलेक्सीज बनने से पहले भी जो है ना यूनिवर्स के अंदर सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है वो डार्क मैटर का होता है.
27% is dark matter, and then 67% almost is dark energy. तो डार्क मैटर जो है 27% समथिंग, तो वो डिफरेंट तरीके से क्लस्टर होते हैं, दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. सो जिनको हम कहते हैं डार्क मैटर हेलोज. So halos are gravitationally bound virialized structures of dark matter, or different sizes of halos are linked with filaments. So agar you see on very large scales, you see like a cosmic web, like spider web. So different halos are linked with structures. So वो जो halos होते हैं, जो smaller halos होते हैं, they go and बड़े-बड़े halos के अंदर dump होते रहते हैं because of gravity को खींचती है. तो massive halos बनना शुरू होते हैं. और फिर हेलोस के अंदर जो है ना वो डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं, गैस डायनामिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, टाइडल फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से जो इंक्लूडिंग बैरियॉन्स, बैरियोनिक फिजिक्स जो होती है, तो बैरियॉन्स जो है ना वो फिर आपस में क्लस्टर होके गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम और स्टार्स वगैरह बनाना शुरू हो जाते हैं. सो दैट फिजिक्स इज बेसिकली द होल फिजिक्स ऑफ गैलेक्सी फॉर्मेशन, द होल फिजिक्स ऑफ गैलेक्सी क्लस्टरिंग, डार्क मैटर क्लस्टरिंग is called late time cosmology or large scale structure in short. ठीक. अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो फंडामेंटली आप कह सकते हैं कि वो पार्टिकल फिजिक्स से है. तो मैंने मेरा एक दोस्त है ससेक्स यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल, वो कॉस्मोलॉजिस्ट है, तो उससे मैंने कुछ सीखा हुआ कॉस्मोलॉजी के बारे में. तो उसमें से एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल जब हम QFTs पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटम फील्ड थ्योरीज, तो उसमें समझ आता है आराम से कि ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इफेक्टिव थ्योरी, कि ओके ये तमाम एनर्जी स्केल्स पे नहीं डिस्क्राइब करेगी फिनोमेना को, एक कट ऑफ है. लेकिन जब हम बात करते हैं इफेक्टिव थ्योरीज ऑफ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब क्या होता है? So effective field theory जो है is a framework. So initially this framework was started in condensed matter physics 1960s के दरमियान. और उस condensed matter physics से जो particle physics के अंदर आया, basically it came from condensed matter physics. Particle physicists ने इस theory को use किया and they applied to particle physics. Standard model जो है वो based on effective field theory. So the idea of effective field theory is कि when you don't know the dynamics of small scale physics, ठीक है, so what you do is like you define some large scale macroscopic parameters, और उन parameter के अंदर you basically put all your ignorance. So you don't know whatever you don't know, you basically put everything in those unknown parameters called effective field theory parameters. और those parameters जो हैं वो you can either measure in experiments or observe if you're doing a cosmology or what. So and then you define your theory, और ये theory जो होती है वो consistent होती है, basically जो उसकी predictions होती हैं. The whole idea of effective field theory is that it's a framework. So what happens like in fluid dynamics as well, you apply the idea of effective field theory. So अगर हम water की example लें, so there are like billions of particles, like molecules interacting with each other. अगर आप उसकी properties को calculate करना चाहेंगे, including all the interactions, fundamental interactions, it's massive. It's really difficult because you have to take into account all the interactions between different molecules and particles. Instead, what you do, you apply effective field theory idea in fluid dynamics. So you say कि यार एक liquid है और all the liquids are characterized by some parameters. So उसकी viscosity क्या है, उसका pressure क्या है, उसकी क्या कहते हैं दूसरी properties fluid की क्या है, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इनको आप मेजर करते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, तो वाटर की प्रॉपर्टी अगर आप कहेंगे कि जो भी लिक्विड होगा उसका प्रेशर ये होगा, उसकी विस्कोसिटी ये होगी, दैट लिक्विड इज बेसिकली अ वाटर. इफ इट्स नॉट, इट्स समथिंग डिफरेंट. और वो जो पैरामीटर्स होते हैं इट बेसिकली कैप्चर्स ऑल द इफेक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल फिजिक्स. सो दिस इज द आइडिया ऑफ इफेक्टिव फील्ड थ्योरी. अब इस आइडिया को यूजुअली लोग आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं. सो कॉस्मोलॉजी के अंदर initially people started to apply this idea on inflation, how you can study inflation, because inflation के अंदर you have more than 200 plus models and every models predict different physics or they have different predictions. So how can you characterize those models? So people applied the idea of effective field theory, and effective field theory के अंदर you can basically characterize all these 200 plus models into 3 subclasses, major classes. So इसी काम को आगे फॉरवर्ड लेकर गए और फिर 2010 के अंदर जो है वो लोगों ने इसी आइडिया को लार्ज स्केल स्ट्रक्चर के ऊपर बनाना शुरू किया. लार्ज स्केल स्ट्रक्चर बेसिकली ये कि व्हेन यू स्टडी द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. There are so many forces you have to take into account. The galaxy formation is something which people don't understand कि क्या होती है. So जैसे सब स्मॉल स्केल्स के अंदर जाते रहते हैं, नॉन लिनियरिटी, नॉन डायनामिक इंटरेक्शन बढ़ती रहती हैं चीज़ों की, और हमें उसके बारे में नहीं मालूम.
So लोग क्या कहते हैं कि large scale structure के अंदर when you define the statistics of large scale structure, so the whole idea of large scale structure cosmology is basically to make the predictions. ठीक है, तो आप एक statistics define करें and then you make the predictions and you then test those predictions with the data, observational data. So in order to describe the like predictions or statistics of large scale structure, effective field theory is the framework which people now use. So इसके अंदर लोग कहते हैं कि ठीक है, you have maybe equations of motion. So equations of motion के अंदर you have Euler equation, you have continuity equation, you have Einstein equation, and this coupled equation, the system of coupled equation is very complicated. It's a higher dimensional system. It's very complicated. It's hard to solve. So then people apply idea of the perturbation theory. So how about you solve it perturbatively? So it's starting from a linear equation, linear solution, and then you add like perturbations, small perturbations. So when you apply the idea of perturbation theory, and then you define the statistics of this large scale structure, basically 2-point correlation functions or 3-point correlation functions of galaxies or matter distribution. So वहाँ पर you see कि जितना आप ज़्यादा higher order terms add करते रहते हैं, उस वक्त precision तो बढ़ती रहती है, but then there are different problems you have to take into account the divergences and everything. So in order to remove those divergences, you applied counter terms. So the idea of effective field theory is basically you start with the fluid dynamic equation. Okay? So you consider the whole universe as a perfect fluid, and then you add some imperfections in the fluid, because the universe is not perfect on small scales. On very large scales, you can apply the idea of homogeneity and isotropic. So the universe behave like a perfect fluid. On small scale, it's not perfect. So the idea of effective field theory is basically define the universe as a perfect fluid with imperfect perturbations on a small scale. So then you can add the terms like viscosity of the universe, the pressure of the universe, all these kind of things, and those terms basically contains all the nonlinear physics we don't know about the galaxy formation, about the clustering and everything, all the dynamical things which you don't know. You can basically put into this unknown parameters, the effective field theory parameters. So there are different advantages to these parameters. Not only they behave like counter terms in effective field theory, by adding those terms you cancel the divergences. They also have physical meaning, because they represent the viscosity or pressure or some other terms in the fluid dynamics, or include like some nonlinear effects in tensor equations, something like that. So that's the idea of this thing. So basically, this is a framework to solve some equations perturbatively by adding counter terms and using the fluid dynamic equation. And everything which you don't know is basically you can encapsulate your ignorance into these counter terms, and you can measure these counter terms either in computer simulations or from the data. ठीक, अच्छा, तो एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी आपने खुद ही बात की शुरू की थी अभी होमोजेनिटी की, तो मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था. तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल देखें, फॉर एग्जांपल लैम्डा सीडीएम मॉडल जो है, ठीक है, यानी कि कोल्ड डार्क मैटर मॉडल जो है, कोल्ड डार्क मैटर जो है, तो ये वाला जो मॉडल है, ये लार्ज स्केल्स पे अगर हम देखें तो ये इसमें कोई बायास नहीं है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि लार्ज डिस्टेंसेस पे वो जो यूनिवर्स है वो आइसोट्रॉपिक है, ठीक है. तो एक मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक पैरामीटर का जिक्र होता है, गैलेक्सी बायस पैरामीटर, ये क्या है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आई थिंक मैं आपका एक काम भी देख रहा था जिसमें आपने थर्ड ऑर्डर पे कैलकुलेशन की थी, तो ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है क्या? क्योंकि थर्ड ऑर्डर पे अगर मुश्किल है कैलकुलेशन करना, तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन मुश्किल है ये. सो आपको उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको आंसर करने के लिए गैलेक्सी बायसिंग को कि व्हाट इज द गैलेक्सी बायसिंग, जो मेरा काम था उसके ऊपर. थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताऊंगा कि लेट टाइम कॉस्मोलॉजी, what are the main observables in cosmology? So there are two main observables in cosmology, like generic observables. One is early universe. So early universe के अंदर what you can observe is the light coming from the Big Bang, cosmic microwave background radiation. Second, observables belong to late time observables, जिसमें galaxy clusters होते हैं, large scale structure.
So most of the information about the universe कि अगर आपकी initial conditions different होंगी, जो कि initial conditions जो हैं वो provided by inflation, तो अगर different dynamic of inflation provide different initial conditions, which means कि जो structure formation होगा वो different होगा late time के अंदर, ठीक है? So there's so many information is hidden in large scale structure. The way matter is distributed, dark matter is distributed in the universe. So uski jo distribution and dark matter ki distribution hai, it contains a lot of information about the initial condition, about the composition, about neutrinos, mass of neutrinos, about so many things, right? The problem is that we cannot observe dark matter distribution directly because it's dark. Okay? It's a matter, but it's dark. We don't know about it. So how can we trace the distribution of dark matter? So there are tracers. There are things which indirectly trace the distribution of dark matter, and we call it biased tracers of dark matter. So one of the examples of biased tracers is galaxies. The galaxies are formed inside dark matter halos. Okay? So galaxies जो हैं वो बाहर नहीं बन सकती हैं. They only are formed inside dark matter halos. Or by looking at the clusters of galaxies or galaxy clustering, you can basically trace the distribution of dark matter indirectly. Okay? So these are called bias tracers. But the idea is like, how can you infer the distribution of dark matter by looking at the distribution of galaxies? So most of the cosmological experiments जो होते हैं, they look at the galaxy distribution. So either photometric surveys or redshift surveys, they look at the billions of galaxies. They make the image of the billions of galaxies. But the idea is like, how can you infer the distribution of dark matter? Because most of the information that we want about fundamental physics and cosmology, it contains in the matter distribution, not in the galaxy distribution. But there are some problems when you define this, infer this distribution. And the problem is that the clustering of galaxies is biased against the clustering of dark matter. So on large scales, for example, if you start with a very simple example on very large scales, when you don't have like lots of non-linearities, everything is linear, simple. So when you define this this relationship, so if you write down the galaxy distribution on one hand and the matter distribution on the other hand, then these two are related by some unknown parameter, which you call bias parameters, or B1. Right? So B is the bias parameter, and this parameter contains everything which you don't know. But the problem is that this is the very simple idea, and it's not true when you define the galaxy clustering, and when you go to the smaller scales in the observation, observations, then you have to add some other terms as well. So again, you can apply the idea of effective field theory, and the idea is like, by looking at the symmetries of equations of motion, what are the most generic terms you can add in this relationship, which follows all the symmetries and allowed by the symmetries. So when you write down all the terms order by order in perturbation theory, so on the first order linear order, you have only one term, and you don't know how much each term is affecting the distribution of galaxies, right? So you add some unknown parameter in front of each term, and these unknown parameters quantify the contribution of those terms, right? So for example, and these are called bias parameters. For example, the first term is just the matter distribution contains B1, which is the linear bias. When you go to the second order, and there are three terms allowed by the symmetries. One is the growth term, how structure is growing. The second is the tidal term. There are tidal forces which also plays into account when you deal with the fluid dynamic description of cosmology. And then there is another shift term. So basically, how one region is shifted when they grow and the structure is formed at the late time. And these three terms have unknown parameters because we don't know how each term is contributing in this electrical. So these are second order bias parameter. But the idea is like, when you can keep going, right? So you can go to the higher order terms and the cubic terms. At the cubic level, there are four distinct terms allowed by symmetry, and there are three terms which basically comes from the lower order terms. When you expand the lower order terms to the higher order terms. So in general, you have seven distinct terms which appear at the late time in the cubic level, and each term has unknown parameter. So the idea is like, when you have to do the data analysis,
and you write down the statistics of galaxy, like 2-point functions of galaxies, 3-point function of galaxies, you have to use the whole expression up to third order term. Because one of the main observables in cosmology is called the power spectrum, or in quantum field theory, you guys call it 2-point correlation functions. So the power spectrum of galaxies, 2-point function, you can make, if you want to make the predictions, how to write the predictions of power spectrum. So you have to apply perturbation theory. In our case, we apply effective field theory of large scale structure. So the first term is the tree level term. The second term is basically the loop terms. So when you go to the loop terms or one loop terms, the galaxy power spectrum contains the contributions from third order terms as well, cubic terms as well. So this is one motivation to study these terms, because they're very important. If you don't study, then your predictions will be invalid. Second is the physical meaning. So what is the physical meaning of these terms? So the idea is, like, when you go back to very early universe, right? Very, very early universe, when the universe is like soup, the fluctuations, you can basically identify the regions in the early universe, and those regions are called protohalos. And those are the regions which basically have the overdensity. When the overdensity of those regions exceed a certain threshold, those regions are called protohalos. And later, when the universe evolves, those regions will form halos or galaxies at the late times. So you can describe this relationship between galaxies and the matter distribution either in the late time or in the early time. The late time one is called Eulerian model, and the early universe one is called the Lagrangian model. So in Lagrangian terms, because the early universe, there are less number of non-linearities, right? So people were using very simple models. So the idea is, even if you use a very, very simple models in the initial conditions and you evolve everything under gravity, then gravity produces non-linear terms at the late times. And these non-linear terms are the cubic order terms. So these cubic order terms are produced by gravity. So in our study, we found that you don't have to, so basically we found that there are some non-local, non-linear terms present in the initial conditions, like the tidal effect. So tides also played its role in the initial conditions when the universe was very small. And the idea is, like, when you include non-local terms in the initial condition, like tidal fields, and then you evolve under the gravity, you get the same number of terms at the late times, but with different amplitude. So in this way, you can relate two different models, and you can also basically reduce the number of parameters in your model. And the whole idea of studying the bias parameters is that because we are not interested in knowing what are the values of these bias parameters. These are some unknown stupid parameters which just appear in our model. We are interested in cosmology to measure some cosmological parameters, like for example, the mass of neutrinos, like for example, the Hubble's constant, right? So dark matter, dark energy density. So these terms have the cosmological parameters. We are interested in measuring these parameters, or matter fluctuations. Basically, this is another important parameter. But the idea is, like, when you write the whole model, like you say lambda CDM model, and then you do the data analysis, then you have to use these bias parameters as well. And at the end of the day, what you do is, like, because these are unknown parameters you don't need in your model, you have to marginalize over these parameters, right? So if you marginalize over these parameters, the precision on the actual parameter you're interested in become worse, right? So the idea is, like, you can make the precision better by not marginalizing, but what you can do is, like, you can measure these parameters using different statistics, some different methods, either using computer simulation if you provide like the realistic scenario, or from the data. So this was one of my work, like how can you measure these parameters from the data? So can you make the model? Can you precisely measure these parameters? So once you measure these parameters, that information you can use in your data analysis. So when you use the Bayesian analysis, Bayesian inference, so and Bayesian inference is basically is that you have the model and you have the data. So what is the likelihood that given this data, what is the likelihood that just the model is the correct, or given what is the likelihood that given this model,
this model, the data is defined perfectly well to this one. So this is like the Bayesian analysis. So in the Bayesian analysis, you also use priors, right? So prior is like how much prior knowledge you have about the unknown parameters in your model. So if you measure these bias parameters and then use the models as a prior and then marginalize over this parameter, then the precision on the actual cosmological parameter become really well. And that is why we studied cubic bias parameter, because that is very important and it appears in the predictions. अच्छा, आपने जो डेटा लिया था वो उसकी डेटा सोर्सेस कौन कौन सी है मेजरली? क्या ये So हब्बल मेरा काम टेलीस्कोप कोई और है? नहीं, so डेटा हम लोग हमने डेटा को डायरेक्टली यूज नहीं किया था. So our work is mostly theoretical modeling. So come up with a theoretical or statistical model, and then once you have the model and the predictions on the model, how can you test those models on computer simulations on Cosmos? So in Cosmos also what we do is like basically we create the whole universe, like baby universe on a grid, 3-dimensional grid. And then we apply the initial conditions and then you solve the equations on the grid and you get nonlinear dynamics at the late time. So using that as a sample, we compare our models with the computer, because we trust that that whatever we're getting from the computer simulation is correct, because we are accurately solving or numerically solving all these equations. Okay, so we get the precise sample as in from the computer, and then we have our predictions, and we can compare how our prediction model is comparing with this computer, the data we're getting from computer, right, from simulations. If they both agree very well, then we can trust that our model is correct, and then we can say that someone can apply it directly to the data analysis. The problem is that in cosmology, you observe the universe only one time, okay? And because of $1 billion experiments, you just observe it one time. In experiments, you can perform experiments several times, but in cosmology, you cannot perform any experiments, only one observation. And when you observe one time, then there is like so the idea is like when you do the observation, you have to take into account all the observational effects as well. But in computers, you have the control. So because you start from the basic TOI model, in computer, you can remove the observational effect and then you can test your models, and then you can add some observational effects as well. So that's what we do. Like we use computer as a tool, but then we also like worked on how you can apply this model to the real data analysis. And we do some theoretical modeling. We included some real effect from observation, systematic effects in our model, and then we can predict it or forecast how well you can perform, measure these parameters from these surveys. But the surveys that we have in our mind are one is the LSST, large scale synoptic telescope, and then there's like DACE. You can use dark energy survey. You can apply these models to a survey called Euclid. So Euclid is the experiment, and if you and there are some other like Simon Observatory, but they deal more with the CMB physics as well. ठीक. अच्छा, तो आपका जो थीसिस है स्टैटिस्टिकल नॉन कॉजेनिटी एज अ प्रोब ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स, वो भी इससे रिलेटेड है? So ये मेरा मास्टर्स का काम था. जब मैंने मास्टर्स का एस्से लिखा था, so primordial non causality, वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है. So I studied inflation using effective field theory. नॉन कॉजेनिटी ये होती है कि inflation अगर so basically the idea is like if the initial conditions in the universe are Gaussianly distributed, the Gaussian random field, then you can define all the statistical properties using only 2-point function, which is called power spectrum. And statistically, it's very simple. Like everyone who knows the simple statistics, like a Gaussian distribution, you have only variance and mean. If mean is 0, the only parameter, free parameter you have is variance. And variance is the 2-point function, right? 2x squared. And all the 3-point function like skewness is 0. And the 4-point function like average of x4 can be written in terms of the variance. The same idea applies to the Gaussian random field. So the initial conditions are Gaussianly distributed.
Then 2-point function, which you call power spectrum, is the only statistics. All the higher order terms, higher order statistics are 0. But the problem is the 2-point function will not tell you anything about the interactions happen during inflation. In order to capture all the interactions happen during inflation, which is crucial to understand the dynamics of inflation, the physics of inflation, you have to go to the third order term. So if you can measure from the data, if you can measure the deviation from the third order, from Gaussianity, basically if you can measure something like 3-point function or bispectrum from the data, and you see the parameter associated with the bispectrum is non-zero with good precision, then you can see that because there is a non-zero 3-point function, the initial conditions should be non-Gaussian. And then using like how well or what is the value of the unknown parameter associated with the bispectrum, you can tell a lot about the interactions of different fields during inflation. And that is what I studied during my master's, like primordial non-Gaussianity as a probe of fundamental physics. ठीक, अच्छा, तो अब आई थिंक वो वाला पार्ट तो आई थिंक अब खत्म हो गया जिसमें मैं आपके काम के बारे में बात कर रहा था, यानी कि टेक्निकल पार्ट इस तरह से खत्म हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कह सकते हैं कि ये है ऑन बीइंग अ फिजिसिस्ट, ठीक है, या फिर ऑन बीइंग अ स्टूडेंट इटसेल्फ। तो पहला मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ओके, ऑब्वियसली आईसीटीपी जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, वो यूनिवर्सिटी नहीं है बड़ी, लेकिन अगर आप सिर्फ लर्निंग इन्वायरमेंट्स को देखें तो आपको आईसीटीपी और कैम्ब्रिज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आया है, या फिर इतना डिफरेंस नहीं है? लर्निंग इन्वायरमेंट सिर्फ, जाहिर है फैसिलिटीज वहां पे ज्यादा। So ICTP is a great institution, or it's great for people coming from developing countries like you, me, came from Pakistan. For us, it's a great stepping stone. So the idea is like people from Pakistan or other places, we want to study like sciences, and और there are so many problems हमारे अंदर होती है ना कि हमें बाहर का पता नहीं होता, हमारे अंदर एक शाइनेस होती है, we don't know how to interact with the scientists, we don't know so many things, and we have the fantasy in our head, like the glamorize, we glamorize all the scientists, all the fantasize about science or being a scientist, and that's not true. So I think ICTP provides a very good stepping stone or a good experience for these people like us. जहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ पे हमें क्या कहते हैं, we realize like what a scientist is. They teaches some courses which are really good, like the high energy physics courses, condensed matter physics courses. People who teaches those courses are very well known. These courses are very good. Cambridge, on the other hand, it's a very different institution, and I think for me, like personally, मेरा कैम्ब्रिज आने का सबसे बड़ी जो reason है, it's not that I went to LUMS, it's that I went to ICTP, and ICTP was very, very, very important for me, and my being in Cambridge or did a PhD from Cambridge, ICTP played a crucial role. And people I met there like Professor Fernando Quevedo, he basically mentored me, changed everything in my life, and it wouldn't be possible to be here without meeting him. So it's really good. But the difference is this, that the courses they teach you during the postgraduate diploma program are very good, are very similar to what we learned during our masters in Cambridge. But the difference is that Cambridge experience is overall is a very different, because it's an institution, or some more main important thing in Cambridge you have is a college system where you interact with people coming from different part of the world. They are very intellectual elite. You discuss with them. So not only you study or learn physics, but you study so many things. So you get to know a lot about economics, social sciences, people going finance, people doing business. So you study so many things because you meet people doing these things, and they are the intellectual elite. And so Cambridge provides a overall maybe a development in your personality. So both have different advantages, but I think ICTP, when you compare the courses in ICTP and Cambridge Masters, they are pretty much the same. The level of the courses are pretty much the same.
अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने भी कहा कि आईसीटीपी जो है उसका एक बहुत मेजर रोल है आपके यहाँ पे कैम्ब्रिज में होने के लिए, और इसी तरह से आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आईसीटीपी से होकर और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी के लिए गए हैं। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन करना सीखना और कोर्सेज यही वजह है इसकी, या फिर जो आईसीटीपी की जो फैकल्टी है उससे जो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स मिलते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है? I think it's a combination of many things. Not all people go from ICTP to do great in later in their हाँ, career. It ठीक। depends on you as well कि आप कितने motivated हैं, कितने hard working हैं, और ठीक। letter is important but not always. So I think most of the students जो मैंने देखा है ICTP के अंदर जो आते हैं, they are very motivated because somehow I mean they think कि यही इनको जिंदगी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वहां से उठ के यहाँ पे आए हैं, जो इन्वायरमेंट है जहाँ से वो स्टडी होती है, जो साइंटिस्ट से मिलते हैं, and not only the ICTP faculty which are really good or well accomplished हैं, but साल के अंदर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और जितनी भी सेमिनार्स होते हैं उसके अंदर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, जिस तरह मुझे याद है कि वहाँ पे मैं बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक मार्डसीना और दूसरे जैसे टाइप के लोग हैं उनसे मैं मिला था। तो एक स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक उस स्टेज पे इतने बड़े लाइक नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी बात है उनसे सिर्फ मिलना, बट आई थिंक जो डेवलपिंग कंट्रीज से जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनकी मेंटेलिटी को रखते हुए उन स्टूडेंट्स का इतने बड़े साइंटिस्ट से मिलना एक आई थिंक एक अच्छी मोटिवेशन होती है विच इनकरेज यू टू डू वेल इन योर थिंग। So I think everything plays role, but major central thing is the student himself or herself. I think if you are ठीक। motivated, I think they will help you, and then you can get a lot from the environment. अच्छा अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि आई थिंक आप 2 साल तक कैटलिस्ट एआई में डाटा साइंटिस्ट भी रहे हैं, राइट? उसके अलावा आई थिंक आप ग्रीन वेल में भी 5 मंथ्स आपने डाटा साइंस पे काम किया। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका जो है काम जो है वो फिर सिमुलेशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं चीज देख रहा हूँ कि वो लोग जो प्योरली थ्योरेटिकल थे वो भी, उनमें से भी कई लोग, फॉर एग्जांपल आई थिंक आमिर इकबाल का आपको पता होगा, वो मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड आ रहा है कि जो थ्योरेटिकल साइड के लोग हैं ये डाटा साइंस पे, मशीन लर्निंग पे, एआई पे काम के लिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसका, कि कुछ लोगों को लगता है कि इसकी जो रीजन है ना वो ये है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि यही एक रीजन है या कोई और रीजन भी हो सकता है? So ये जो टॉपिक है इसके अंदर आई थिंक आई कैन टॉक फॉर आवर्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए फ्रॉम अ साइंटिस्ट पर पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बात तो यह है कि जो मैंने कैटलिस्ट में और ग्रीन वेल के अंदर काम किया था वो साइड प्रोजेक्ट्स थे, लाइक आई डिड व्हाइल डूइंग माय पीएचडी हियर, एंड द रीजन वाज टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप। सो वो मेरे एक फ्रेंड का स्टार्टअप था कैटलिस्ट, और मैं उसका एक पार्ट था, एंड ही गेव मी द प्रोजेक्ट एंड आई वाज लाइक ओके इट्स ग्रेट बिकॉज आई वांट टू लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप and I want to learn about data science and I want to actually learn how businesses work as well. So it's a great opportunity to directly work with some mid-sized company in the UK. Greenvale is a very good agricultural business. So that was my motivation, and I did some other entrepreneurial work as well. We can talk about them later. The idea is like theoretical physicists जो होते हैं, सबसे पहली बात, there are two or three points I will describe. The first point I will say, the theoretical physicists होते हैं, they have to understand that the skills they have वो काफी unique skills हैं. So when you study when you maybe for example when you study particle physics or cosmology or condensed matter physics, you are dealing with very complex system. Okay, very complex system. So if you understand how to model complexity interactions, that's a great skill. So physicists are very good at mathematics, they're good at modeling, they're good at, if you're working in simulation, you're good at programming and simulations. So they have overall a very good mindset to solve complicated problems. So with this mindset, you can apply this mindset to solve any problem. ठीक है? और दुनिया में जब भी जो रेवोल्यूशंस हो रही हैं, जो इन्वेंशंस हो रही हैं, वो बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। शुरू में बहुत स्लो होती हैं और बहुत तेजी के साथ हो रही हैं और डिजिटल चेंज हो रही हैं। हर टाइम के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं,
जो important होते हैं. हम्म So I say usually that this is my personal belief that that last century belonged to physics. Okay, there's so many things happen in physics, particle physics, condensed matter ठीक physics, discoveries, models. This century belongs to AI and biology, for example. हम्म So much will happen in this direction, and all the revolution, the puri ki puri dunya is तरफ से change हो रही है. So her dunya, and then not these are the technological problems, but then we have more important problems like climate change. We have other problems. So how you can use your skills to solve these problems are very crucial. And I think this is one of the reasons that people move their interest. Second is again employment opportunities. Funding जितनी ज़्यादा है, so basically employment मकसद ये होता है ना कि जहाँ पर आपके पास जो important problem solve करने वाले हैं उन्हीं के लिए funding मिलती है problem को solve करने के लिए. And you have to present your solution. अगर आपको वही 50 साल पुरानी फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, so no one is going to give you funding, no one is going to give you employment. But if you want to solve the current problems, right, with your mindset, then people will give you funding, people will give you employment. So that's one reason. And this is, I think, very good thing to think about it, because you should not think about the problem you're working in. You should basically focus more on the skill set. And with if you develop your skills, and especially like for students like yourself and other students जो कि अभी start करने जा रहे हैं PhD या कर रहे हैं, for them I would advise के focus more on developing the skills. The skills are more important. Don't get too emotional with the problem you're working with. ठीक है? So because दुनिया में time के साथ साथ problems change होती रहती हैं. So if you have developed that skill set, then you can basically switch very easily and solve one problem, the other problem, the other problem. I think this is why like most of the scientists, theoretical people, they move their interest very quickly and work on. And machine learning obviously is like something is very important. And the idea is like very recently now, right now, people are trying to solve problems in fundamental physics using machine learning and the problems of machine learning using fundamental physics. So we recently Harvard and MIT ने using a collaboration एक institute बनाया है. The whole idea, and they got $20 million funding from National Science Foundation. And the idea of that interaction or collaboration is to solve problems in fundamental physics using machine learning, and to solve problems in machine learning using fundamental physics, vice versa. So this has become very crucial. Even in cosmology, people are using machine learning, deep learning stuff. So I think it's everywhere, and people should focus more on this direction as well. I think एक मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बता रहा था कि अगर आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करो तब भी आप फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हो. और ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था. अगर उसने फॉर एग्जांपल मुझे एक बुक के बारे में पता लगा, उसका नाम था क्वांटम फील्ड थ्योरी फॉर इकोनॉमिक्स. उसने कहा कि जो क्वांटम फील्ड थ्योरी के जो मेथड्स हैं वो इकोनॉमिक्स में यूज हो रहे हैं. तो इसमें एक और बात मैं ये करता चलूं कि आपको पता होगा अच्छे से कि जो फॉर एग्जांपल हाई एनर्जी फिजिक्स पे जो स्टूडेंट्स काम करना चाहते हैं वो रेयरली कभी कोडिंग करते हैं. तो आप जो कह रहे हो स्किल सेट पे काम करो, तो आप ये एडवाइस करोगे कि जो लोग थ्योरेटिकल फिजिक्स पे, हाई एनर्जी फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, उनको फॉर एग्जांपल पाइथन में कोडिंग करनी, इस तरह की चीजें आनी चाहिए? ऐसा नहीं कि अपने को बिल्कुल डिटैच कर लो इन चीजों से. कोई लोग करते हैं. Absolutely. 110, 150, I think 1000%. Absolutely. अच्छा, ठीक है. हाँ, so उसके अंदर I think everyone should learn coding right now. Everyone should learn coding. Everyone should know basic statistics. Everyone should know data analysis. Everyone should know and economics की जो आपने बात की, मैं आपको कुछ examples दूं. जब quantum field theory की बात कर रहे हैं, again quantum field theory जो major जो लोगों के अंदर, जो students के अंदर जो confusion होती है when they study quantum field theory for the first time, they think it's a real theory, right? They think कि जो fields हैं quantum fields के अंदर, they're the real fields, और वो particles कहाँ से आ रहे हैं. It's not real physics. It's not real stuff. It's just the framework in particle physics. It's just the framework they develop to compute scattering amplitude. Like particles collide करते हैं and different particle में बन जाते हैं, तो बीच में जो interaction हो रही होती है, that is captured by scattering amplitude. The whole idea of developing quantum field theory is to calculate and predict or calculate scattering amplitude. So it's a framework.
It's a framework. ठीक It's not a real physics. And you can apply this framework again to solve other problems if you're very good at identifying the problems. Because economics is one field people apply. Because I would say, and there are other people who says this as well, that economics in general is actually more complicated than physics. In physics, everything is very logical. In the real economics, things are not logical. Although बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दे थिंक इकोनॉमिक्स इज वेरी रैशनल. इकोनॉमिक्स इज नॉट रैशनल. ठीक है, तो पूरी फील्ड है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की which says that it actually depends on our irrationalities. एक 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 मैं नाम लेता हूँ, शायद आई डोंट नो दैट सो यू नो और मे बी अदर पीपल वुड नो, एरिक वाइंस्टाइन, डॉक्टर एरिक वाइंस्टाइन. तो उनकी अपनी पॉडकास्ट भी है. तो Eric Weinstein, he did a PhD in particle physics from Harvard, and he was a fellow at Oxford. And then he left physics, he went to economics. Now he's a managing director of Thiel's Capital. So Peter Thiel, जिन्होंने PayPal बनाया था, उनका जो अपना personal fund है, he manages his $1 billion fund. Like a physicist, a particle physicist, managing a $1 billion fund, right? Eric Weinstein. And Eric Weinstein is the person I like. What I like about him is like he's bringing ideas from physics to solve problems in economics. So recently, for example, he has been working on applying gauge theories in economics, because gauge theory is a problem you can solve. So there these ideas, like और उनके कुछ ideas हैं कि you can make the models in economics from first principle, which physicists are very good at. So that is for example. अच्छा, and high energy physics के अंदर जैसे high energy के अंदर जैसे आप बात कर रहे थे, so they definitely should learn coding, Python, or do some problem which involves maybe computation. I think if they have those mindset of physicists, but they have the skill set as well to solve the problems, they can do anything later on in their lives. ठीक. अच्छा, इसमें यानी कि इसमें एक और चीज लोग कहते हैं कई दफा कि फिजिक्स में आप रिडक्शनिस्ट अप्रोच रख सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में चीजें इमर्जेंट फिनोमेना है, दरअसल वो रिडक्शनिस्ट चीजें नहीं हो सकती. और कुछ लोगों का ये बल्कि एतराज होता है कि अगर फिजिसिस्ट जाएंगे इकोनॉमिक्स में तो वो इकोनॉमिक्स को भी रिडक्शनिस्ट अप्रोच से देखेंगे, हालांकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारा जो फिनोमेना है वो इमर्जेंट फिनोमेना है. तो आप इस बात से एग्री करते हैं? I think emergent phenomena भी हैं, reduction भी approach भी use कर सकते हैं, but you never know, right? And ऐसा नहीं है कि physicists गए नहीं है, physicists गए हैं economics and finance के अंदर. तो अभी जो फाइनेंस की जो करंट सिचुएशन है वो सारी की सारी चेंज हो गई है बिकॉज सो मेनी फिजिक्स 1980s के अंदर फिजिसिस्ट मैथमेटिशियंस जो गए उन्होंने अपनी माइंडसेट और मेंटालिटी को इम्पोज किया, मॉडल्स बनाए, बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, everything very abstract. So if you compare models in finance and economics now, they look very similar to physics. So but though the idea of being reductionism and emergent, I think it's more philosophical than. ठीक. अच्छा, लास्ट कुछ क्वेश्चन है मेरे पास आपसे. इनमें से एक जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी आप कह सकते हैं कि आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट उससे से रिलेटेड है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फिजिक्स स्टूडेंट हो तो जाहिर है आप फिजिक्स स्टूडेंट होने से पहले एक इंसान हो और आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए. तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल एक पीएचडी स्टूडेंट हो या फिर कुछ लोग तो कहते हैं बल्कि जब आप एक मास्टर स्टूडेंट हो तो आपको ना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए. और कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब आप एक पीएचडी स्टूडेंट हो तब करना चाहिए आपको. तो अब एक दो क्वेश्चन है. पहली बात तो ये कि आपके ओपिनियन में क्या कौन सी बात ठीक है, या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि पीएचडी के बाद स्टार्ट करो, ये तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है. और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है इन्वेस्ट तो जाहिर है हर एक बंदे की अपनी कैपेसिटी है. तो फॉर एग्जांपल वो गूगल के शेयर तो नहीं खरीदेगा ना जाके, क्योंकि वो तो बहुत महंगे हैं. तो आपकी कोई रिकमेंडेशन है कि अगर आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो स्टार्ट इन चीजों पे पैसे लगाओ अगर आपने इन्वेस्टिंग की हुई है पहले तो? हाँ, मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है थोड़ी सी, और मैंने पिछले 2-2.5 सालों में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है यहाँ पे कैम्ब्रिज के अंदर. मैंने स्टडी की, कोर्सेज लिए. हमने एक एक्चुअली
मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने जो मैथमेटिशियन था कैम्ब्रिज के अंदर, एंड अभी वो एक बहुत बड़े हेज फंड के अंदर काम कर रहा है। हम दोनों ने एक इनफॉर्मल सा डिस्कशन ग्रुप बनाया था, इन्वेस्टमेंट डिस्कशन ग्रुप कैम्ब्रिज के अंदर, एंड वी हैव इंस्पायर्ड मोर देन 20 पीपल इन आवर सराउंडिंग, लाइक सारे कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स अंदर उधर के, टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो मेरा भी एक्चुअली प्लान यही है कि इन फ्यूचर मैं इसी डायरेक्शन को परस्यू करना चाहता हूँ। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये कि आप जिस एज के अंदर आपको ये रियलाइजेशन आ जाए उतनी अच्छी है, और वहीं से स्टार्ट करो, लाइक द फर्स्ट डे, जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो करो। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए सोचना कि मैं मास्टर्स के बाद करूंगा या पीएचडी के बाद करूंगा, या जब मेरे पास इतने पैसे जमा होंगे या मेरी जब इतनी सैलरी होगी जब मैं ऐसा करूंगा, नहीं। आप अभी से स्टार्ट करो, एक्सप्लोर करो। $1 भी होगा, ₹1 भी होगा, put aside, think about how to invest or save, think long terms, think like long terms means like 20 years or 30 years down the line, कि जब आप रिटायरमेंट के करीब हो गए तो you should have sufficient fund in your hand, not maybe short term things. आजकल लोग जो है ना वो रातों रात अमीर होने वाले होते हैं ना, कि बस 2-3 महीने के अंदर आप मिलियनर बनते हो। वो वाली मेंटेलिटी हमेशा आपको नुकसान पहुंचाती है। थिंक लॉन्ग टर्म, think about the risks, because you want to have a very good retirement plan, right? अपनी जो सेविंग्स हैं, एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस लोगों के होते हैं फजूल के, वो आप कट डाउन करें, सेव ज्यादा करें, एंड एवरीवन कैन डू दैट। तो जनरल आइडिया इज लाइक, रूल ऑफ थंब इज कि विच एवर सैलरी यू हैव, तो जो भी है, चाहे मास्टर्स के स्टाइपेंड ही क्यों ना हो, जो 15 to 20% है उसका वो आप साइड पर पहले ही, ठीक है, बिल्कुल साइड पर, और जितने बचते हैं उसमें अपने एक्सपेंसेस कवर करें, और फिर जब वो साइड पे हो जाएंगे, एंड देन थिंक अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो ये चीज, ये स्किल्स जो फाइनेंशियल एजुकेशन की स्किल्स है ना, आई थिंक ये सारे स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। और ये एजुकेशन के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी या वर्ल्ड वाइड में भी, हर स्टूडेंट्स को, इवन अंडर ग्रेजुएट मास्टर को ये देनी चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होती। या तो ये आपको पेरेंट्स से मिल रही होती है अपनी, या आपको, अगर आप बहुत लकी हो तो आपको ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो आपको बता देते हैं इधर उधर से। उसके अलावा ये एजुकेशन लोगों को नहीं मिल रही होती, और अगर आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली ये नहीं कर रही होती इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपने करना कैसा है। आपको पता ही नहीं होता कि आपने लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी हासिल करनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती क्या है, कुछ नहीं पता होता। तो जितना जल्दी इसके बारे में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, जितना जल्दी वो अच्छा है। देयर सो मेनी रिसोर्सेस जो आप देख सकते हैं। आई वुड से कि पहले तो स्टार्ट ये करें कि जितने भी, बेसिकली रूल ऑफ थंब अगेन ये होता है कि जो आपका क्या कहते हैं, आपकी जो डेट्स हैं वो आप खत्म करें पहले, और फिर जो आपकी सैलरी में से 15-20% है वो साइड पे करें, और फिर उनको इन्वेस्ट करना शुरू करें। सो यूजुअली अगर आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो द आइडिया इज कि इट्स वेरी रिस्की, but you can get the high gains as well, but risky like no one can get it, and you don't know, and you don't have the time to analyze individual companies, so not everyone can do that. So the general idea is like, instead of investing in one stock, you can invest in index funds. So index funds is the starting point, so you can Google it or see what index funds are. But index funds are the good place for long term investments, I would say. But there are so many things you can do, like but the idea is like, start as soon as possible. Like, this is very very important. ठीक। And, अच्छा, तो again important interesting thing मैं बताऊं कि even जो हमारे हीरो, जिनको हम समझते हैं फिजिसिस्ट हैं, they were very good at it. Newton used to do investments very like always, all the time. और न्यूटन जो है उसे खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, बट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर ही वाज बर्सर। सो बर्सर का जो काम होता है वो उनके फंड को मैनेज करना होता है, एंडोवमेंट फंड को। तो न्यूटन यूज्ड टू मैनेज एंडोवमेंट फंड, यूज्ड टू इन्वेस्टमेंट। आइंस्टाइन वाज वेरी गुड एट इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। सो उसका एक आइडिया ये है कि दुनिया के देयर आर 5 fundamental forces, 4 are of course belongs to physics, and one is the compound effect. So compound effect is something compound is the 5th force of nature. So Einstein used to do it. Everyone does it. That's what I do. अच्छा, तो इसमें आई थिंक अब लास्ट कुछ क्वेश्चन है, ये मैं पूछता हूँ। जब कोई फिजिक्स क्या कहते हैं, कोई फिजिसिस्ट या कोई फिजिक्स स्टूडेंट आता है
पॉडकास्ट पे। तो एक मेरा क्वेश्चन ये होता है कि चूंकि फिजिक्स के कई सारे जर्नल्स हैं, तो आपका कोई फेवरेट जर्नल है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। आई थिंक मैंने फिजिक्स में चलें। अपनी पीएचडी में बहुत कम पेपर्स पढ़े, क्योंकि हमारी अच्छा फील्ड चलें। लार्ज स्केल स्ट्रक्चर के अंदर अभी चीज़ें इमर्ज हो रही है, चीज़ें बन रही हैं। और जब मैं शुरू में मैंने पीएचडी स्टार्ट करना शुरू की थी, तो मैं पेपर्स पढ़ना चाहता था बहुत सारे। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे प्रॉब्लम दी थी डायरेक्टली, एंड ही सेड कि दिस इज लाइक रियल प्रॉब्लम, जस्ट सॉल्व इट। एंड मैं कहता था कि यार मुझे पेपर्स पढ़ने दो। कहता नहीं नहीं नहीं, पेपर पढ़ के टाइम ज़ाया करोगे। इफ यू वांट टू डिस्कस दिस, कम एंड टॉक टू मी, डिस्कस विद मी। ठीक तो ठीक। मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम पे काम करने के साथ साथ मैं पेपर पढ़ता था। जो जो मुझे रेलिवेंट चीजें लगती थी उसको सॉल्व करने के लिए उससे रेलिवेंट पेपर पढ़ता था। तो एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं पीएचडी कर चुका हूँ, मैं जितने पेपर उठाता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ या फिर उसका कंक्लूजन पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे समझ में आया। तो मैं इतने इतने कंटिन्यूसली मैं पेपर्स किसी जर्नल की नहीं पढ़ता। जो पेपर रेलिवेंट होता है प्रॉब्लम से, जो मैं कर रहा होता हूँ, बस मैं वो पढ़ रहा हूँ, चाहे वो जिस भी जर्नल का हो। ठीक। बट जो मैंने अच्छा पेपर आपको कोई मेरे जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो या तो जेकैप के अंदर हुए हैं या फिजिकल रिव्यू डी में हुए हैं। तो एंड आई डोंट नो फिजिकल मोर देन दैट। फिजिकल रिव्यू अच्छा है। चले कोई नहीं। अच्छा आपको मोस्ट फेवरेट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम है? वेल, चेंज होते रहे, चेंज होते अच्छा। रहे। पीपल वुड से कि अब्दुल सलाम थे, पीपल वुड से आइंस्टाइन थे, ब्ला ब्ला ब्ला। आई थिंक मेरे लिए बहुत, अगर मैं ऑनेस्टी की बात करूं, वो फिजिसिस्ट जिसने मेरी जिंदगी चेंज की है, जो मेरे अच्छे मेंटर हैं, आई वुड से प्रोफेसर फर्नांडो क्वेवेडो। He is my all-time most favorite physicist. I don't ठीक। know about Salam, right? Abdul Salam was the hero, most of the people. For me, हम्म। he's like my Salam. ठीक। So, because the good thing about Fernando is Professor Covedo is he's a very successful physicist, but he's a हम्म। very humble person, and he's a nice guy. Like he's one of the nicest guy I know. Um, so चूंकि I आपने think इतनी बार नाम ले लिया उनका, मैं इतनी बार आपने नाम ले लिया, तो मैं जब ये पॉडकास्ट अपलोड करूंगा मैं उनकी तस्वीर भी लगा दूंगा इस पॉडकास्ट में, ताकि लोग देख सकेंगे वो हाँ, कौन है। उनको उनको जरूर बताएगा। बट इसके लिए हाँ, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं उनको कहने के लिए। मुझे याद है जब मैं आईसीटीपी के अंदर था, तो हमारा एग्जाम था क्वांटम फील्ड थ्योरी का। और आईसीटीपी का टाइम मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा गुजरा था। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मेरे साथ एक स्टूडेंट था, हमारे साथ रह रहा था, और हम्म। 16 अब्बास, और उसको कैंसर हो गया था बेचारे को। एंड देन ही पास्ड अवे। 3-4 महीने वो हॉस्पिटल में रहा था, और इट वाज वेरी टफ फॉर मी एज वेल। और उसको, मैं उसके साथ ही रहता था, और उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान भेजना पड़ा एट द एंड ऑफ द डे। और फिर मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी उस वक्त। आई रिमेंबर कि जब ओह। क्वांटम फील्ड थ्योरी का एग्जाम था, 3 दिन पहले आई वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, मैरी क्यूरी लाइब्रेरी, और मुझे मैसेज आया कि मदर पास्ड अवे। तो मैं क्या कहते हैं, जब नीचे गया, मुझे कोई कुछ अंदाजा नहीं था, तो मुझे फर्नांडो की वाइफ मिली, अलीसा कोवेदो। तो मैंने उनको बताया, हम्म। एंड शी वाज वेरी नाइस। एंड वो देन वो भी नेक्स्ट डे बहुत वो बहुत फर्नांडो, नाइस है। फिर नेक्स्ट डे फर्नांडो कॉल्ड मी, एंड देन उन्होंने मुझे टिकट भेजा कि तुम जाओ पाकिस्तान, जाओ, मतलब फ्यूनरल अटेंड करो। एंड इंटरेस्टिंग ठीक। थिंग ये है कि जब मैं कैम्ब्रिज में मास्टर्स कर रहा था, तो हमारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है यहाँ पे। जब आप मास्टर्स करते हैं तो पीएचडी हम्म। के लिए जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना होता है। और अनफॉर्चुनेटली 3-4 दिन पहले, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम से पहले, मेरे फादर की डेथ हो गई। एंड आई वाज अगेन शॉक्ड कि मैं क्या करूं, इतना इतना मुश्किल, और मैं बाहर हूँ, अब्रॉड हूँ। तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, और मैं डिपार्टमेंट आ गया जहां मैं अभी बैठा हुआ भी हूँ, सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंसेस। तो मुझे यहाँ फर्नांडो मिले। जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो उसी दिन जब मैं नीचे आया, मुझे अलीसा मिली, उनकी वाइफ। और जब मेरे फादर की डेथ हुई, मैं यहाँ पर आया, उसे मुझे फर्नांडो कोवेदो मिले। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं वापस उनके फ्यूनरल को अटेंड करूं, या फिर मैं एग्जाम दूं पीएचडी का। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि रुक जाओ और एग्जाम में बैठो, और अब जो हो चुका है वो हो चुका है। तो अगर मैं, तो कोई दूसरा बंदा होता तो वो इमोशनल डिसीजन ले लेता, बट आई थिंक ही gave me the right advice. It was very hard. कोई कहेगा कि यार अपने फादर का फ्यूनरल अटेंड ना करो और टेस्ट में जाहिर है। बैठ जाओ, बट आई थिंक ही डिड दैट, ही अंडरस्टूड। और मैंने दिया, और हो गया, पीएचडी में एडमिशन हो गया। और पीएचडी में एडमिशन होने के बाद भी उन्होंने मुझे हेल्प की चूज करने में सुपरवाइजर के बारे में। आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन जो उन्होंने मुझे सजेशन दी, जो मेरे सुपरवाइजर कि ये सुपरवाइजर चूज करो। हालांकि जो मेरा सुपरवाइजर है उसका पीएचडी सुपरवाइज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ही वाज द फर्स्ट फर्स्ट स्टूडेंट
but Fernando could see that yeah, he is doing really good. And then he gave me so many good advices as well. I remember when I started my PhD, he was here in November. So I went to his office. He said like, now you're in Cambridge, because so many people आप Cambridge के students हम लोगों के अंदर बड़ी arrogance हो जाती है एकदम से एक खास point के बाद. तो कहते हैं कि always be humble, जो भी करोगे. तो उनकी ये advice बड़ी अच्छी थी. Or there's so many things I want to talk, but I think he's the person who is my all-time favorite physicist and a person. अच्छा, आपको कोई most favorite mathematician है of all time? I would say Jim Simon. Jim Simon. And the idea of Jim Simon is not because everyone is now talking about Jim Simon these days. मैं उसको काफी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो मेरा प्रोजेक्ट था वो जिम साइमंस के ऊपर था, चर्न साइमंस गेज थ्योरी के ऊपर था, कंडेंस्ड मैटर, the application of Chern Simons. So I know him as a physicist and mathematician, and then I know him as a finance guy. But the idea is very smart in a way that he know how to solve problems, how to identify problems, and how to solve problems. And I think that kind of a mathematician who loves solving more problems is someone who really inspires me. So I would say Jim Simon. And then the idea is like not only problem solving, but Jim Simon ने जितनी ज़्यादा science की development में काम किया है is amazing. Say not only he made a lot of money himself doing finance, he invested a lot in science and technology. A lot. So in cosmology, Stony Brook में उनका सेंटर है. Exactly. उनका सेंटर स्टोनी ब्रुक में है. उन्होंने एक न्यूयॉर्क के अंदर एक फ्लैट आयरन इंस्टीट्यूट बनाया है $2 billion लगा के. वहां से मुझे भी विजिटिंग पोजीशन की ऑफर आई हुई थी फ्यू मंथ्स के लिए. तो इस फ्लैट आयरन इंस्टीट्यूट हैज ग्रेट. कॉस्मोलॉजी के अंदर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फंड किए हुए हैं. एक साइमंस ऑब्जर्वेटरी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अंदर लगाए हुए हैं. ICTP के अंदर वो फंड देते हैं, कुछ फेलोशिप्स हैं उन्होंने बनाई हुई हैं. So there are so many things in mathematics, in science, in cosmology, in physics कि जिन्होंने invest किया है. So as a great mathematician, how to solve problems, but not only solving problems, he knows how to develop different fields of science and technology. ठीक. चलिए, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए इस पॉडकास्ट को. इंशाल्लाह अगली बार दोबारा कोई पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ. ठीक है. This is very good. Thank you very much.